Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So ultimately, SBI Junior Associate main examination has come to an end. And this examination is unique in different manners. Why I call it unique? The uniqueness is that second shift of 10th got so many questions out of box, and it has ultimately led to lot of thought provoking ideas why this is happening. And once we read the comments of various shifts, we will find that the most of the candidates from second shift are the ones who are saying that injustice is done to them. Naturally, when we prepare for any competition, we prepare with a hope that this will fetch us a job, and we put all out efforts. And in this feeling, I am with you because I felt very bad when I read the comments of second shift people of 10th of April, because the examination should be such that gives ultimate satisfaction to the candidate that I could do justice with the exam. He puts lot of labor or she puts lot of labor before going to the examination, and this is a eye opener for the examiners that now they should think and see the sentiment of candidates and set the examination that really satisfies large number of candidates. Because in my journey with you for last 13 years, from 2012 onwards, I have never seen such a hue and cry on any examination. Although there are years when people said that quant is tough, sometime even general awareness was also tough, reasoning was tough, English was tough, but asking out of box questions was never seen. Sometimes candidates are able to perform reasonably well, sometimes they are not able to perform reasonably well. But setting out of box questions is really injustice to the candidates, those put lot of efforts. At my level, I have raised the issue wherever I can raise. On this channel, I have posted various videos also. I have given some suggestions also what can be done in future. Let's hope the authorities will listen to that and some corrective measures are taken in future. But at the same time, I would like to say, I have observed whenever we see that some shift people are over worried, but once result comes, the maximum candidates are from that shift. I am not saying that the other shift candidate should feel something good or bad. So there will be some equilibrium when normalization will happen. As in my past video, I have mentioned that 19,000 plus candidates, those are top in the merit, may see job either through merit list or through first, second, third wait list. I feel that the distribution of candidates, number of candidates, those will ultimately get the success, may be more or less uniform. That is my expectation. Some people from second shift are feeling let down, but I feel when we will see the result, there may be a reasonable number of candidates from each shift, maybe first shift, second shift of 10th or today's shift. So we have to wait, because once some issue is raised, the authorities have to take some corrective measure.
So I am not giving any cutoff figures because cutoff figures will be meaningless, because this year normalization will be extraordinary. That's what I can say, what I could sense, because variation is too much. And when variation is too much, to equalize the competition, I think the authorities will adopt some proactive steps that will satisfy the candidate. Let's hope for the best. I am praying to God for justice for each one of you, whether you are shift 1 candidate, whether you are shift 2 candidate, whether today shift candidate. Let the justice be given to everyone. Okay, this is what I can say. This is my feelings. I am with you. As you are sad, I am also sad. I am keeping the posture which is giving you satisfaction, because if I will start weeping, or if I will start a down face, you will further go down, and that's why I am keeping smiling face, just to give you solace. Being a senior person, this is my duty to keep your morale high, and that's why I am starting this video with a smile, so that I can take away some tension out of your mind. From heart of heart, I am equally sad as you are. Okay, but I am not allowing my sadness to appear on my face, because I don't want to see you sad. But I can only do one prayer, and I can only hope that the equitable number of candidates may be selected from each shift. No shift candidate should feel let down. That is my desire. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI जूनियर एसोसिएट मेन का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, और ये एक तरह का बड़ा अजीब सा एग्ज़ाम रहा। पिछले कई वर्षों के साथ में आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई शिफ्ट ऐसी हो जिसके अंदर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस इतने आ गए हों कि पूरा का पूरा मनोबल कैंडिडेट्स का टूट गया हो। और इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ामिनर हैं, जो भी लोग पेपर सेटर हैं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। उनको बच्चों के सेंटिमेंट्स का, बच्चों के बातों का ख्याल रखना चाहिए। कितनी मेहनत वो करते हैं, कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, और एकदम उनका दिल टूट जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि हर शिफ्ट का कैंडिडेट सीरियस है, हर शिफ्ट के कैंडिडेट ने पूरा जोर लगाया है पास होने के लिए, पर कमेंट्स से ये देखने में आया है कि सेकंड शिफ्ट के लोगों के साथ ज़्यादा ही अन्याय हो गया है। क्योंकि अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चंस उनको देखने को मिले जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या उन सोर्सेज से हम कह सकते हैं जहां से वो तैयारी करते हैं उससे कवर्ड थे। हालांकि हर शिफ्ट के लोगों ने मेहनत की है। ऐसा भी मेरा मानना है कि जो आज सेकंड शिफ्ट के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, पर जब रिज़ल्ट आएगा तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर शिफ्ट के से निकल के आएगा, और हम देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट से भी लोग क्रैक किए हैं, सेकंड शिफ्ट से भी क्रैक किए हैं, और 12 की शिफ्ट से भी क्रैक किए हैं। अब इस इक्विलिब्रियम को वो कैसे बनाएंगे SBI वाले, ये देखने की बात है। पर मैं ये अपेक्षा करूँगा कि जितनी ये तीनों शिफ्ट हैं, इसके साथ किस तरह से अब न्याय किया जा सकता है, इसके ऊपर स्टेट बैंक को सोचना चाहिए। और हर शिफ्ट के बच्चों को उनकी टफनेस के आधार पर किस तरीके से इक्विटेबल लाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक शिफ्ट बहुत टफ है, उसको ऊपर उठाने के लिए दूसरे शिफ्ट के लोगों को नुकसान पहुंच जाए, ऐसा भी शायद ठीक नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि तीनों शिफ्ट के साथ जस्टिस किया जाए, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट थी, चाहे वो सेकंड शिफ्ट थी, चाहे वो आज की शिफ्ट थी, क्योंकि सब लोगों ने पूरी जी जान लगाई है, सब कैंडिडेट्स ने पूरी मेहनत की है। अंदर से मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितना आप दुखी हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत मैंने स्माइलिंग फेस से जानबूझ के की है। अपने अंदर का दुख मैंने आपको इस वीडियो के फेस पे आने नहीं दिया, क्योंकि आप पहले से दुखी हो, और अगर मैं भी लटका के आ जाऊँगा फेस अपना तो आपका मनोबल टूट जाएगा। मैं सीनियर हूँ आप सबसे, मैं आपका गार्जियन हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है कि आपके मनोबल को बनाए रखना।
अभी भी मैं आशावान हूँ। काफ़ी लोगों ने अपनी आशा छोड़ दी है, मगर मैं अभी भी आशावान हूँ कि जब रिज़ल्ट आएगा तो हर शिफ्ट के इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का ही चेहरा खिलेगा और हर शिफ्ट के साथ न्याय होगा। कैसे होगा ये स्टेट बैंक को सोचना है। टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को वो लगाकर इस सेंटीमेंट को समझकर इसको अंजाम दे सकते हैं। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन ऐसी हो जाए कि दूसरी शिफ्ट के साथ अन्याय हो जाए। जो हो सबके लिए सही हो, जो हो जितना हम न्याय कर सकते हैं वो करें, क्योंकि पेपर तो आउट ऑफ बॉक्स आया है, इसको सबको मानना पड़ेगा और एग्जामिनर्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो इस तरह की चीज़ें यंग जनरेशन के साथ ना करें। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और बच्चे उसके साथ जूझ रहे हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो पूरी आशा के साथ पूरे रिसोर्सेज को लगा के पूरी मेहनत करके इन एग्ज़ाम्स को देते हैं। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं दिल से आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ और जिस भी लेवल पर इस बात को हम उठा सकते हैं मैं ज़रूर उस लेवल पर उठाऊँगा। और वीडियोस भी मैंने बहुत डाली है इसके अंदर और कोशिश की है कि आपकी बात उन स्तर तक पहुँचे जहां आपके साथ जस्टिस हो और ईश्वर करे जस्टिस हो। कट ऑफ मैं कुछ भी नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। इस साल का नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अजीब होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है। भगवान सबको जस्टिस करे और एक बेटर सेंस प्रिवेल करे एग्जामिनर के दिमाग के अंदर और आपको सबको न्याय मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं आपके साथ हूँ और ईश्वर आपके घरों में खुशियाँ लाए, ये मैं चाहूँगा। जो हो चुका है उसको जितनी जल्दी आप भूलेंगे, आने वाले एग्ज़ाम्स पे कंसंट्रेट करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मुझे पता है काफ़ी बच्चों का बिल्कुल दिल टूट गया है, मुझे पता है काफ़ी लोग रो रो के बेहाल हैं, मुझे पता है कई लोगों को रात को नींद भी नहीं आ रही है। आपने लिखा है कि आंखें सूज गई हैं। ऐसा होता है, जीवन में बड़े बड़े सदमे आते हैं, मगर उससे निकलना होता है, इससे निकलिए। और मेरा ख्याल जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इसको सीरियसली लेंगे, इस इशू को। ये बहुत बड़ा इशू है, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी एजेंसी के लिए अच्छा नहीं है, इसको देखा जाना चाहिए और इसमें अब भी जो कोर्स करेक्शन की जा सकती है वो की जानी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं आपके साथ हूँ और अपना मनोबल बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। और